very good talk on a book written by Sir here. I will give a brief introduction. So, this book is a biography that provides a vibrant portrait of Sri Bhupen Thakur, a revered artist and Padma Shri awardee. This book traces his artistic evolutions, the hurdles that he faced, and his significant influence on modern India. Today we will have two speakers, as you can all see on this poster. First is Mr. Dilip Kothari sir, who I had a very good chance to have an interaction with. And sir is a Gujarati writer, biographer, translator and blogger from Vadodara. Initially he had trained as an engineer and dedicated his initial life to it, and then later on to now he's dedicated to writing biographies and blogging. And sir is known for his translations that showcase skills in his research, documentation and narrative representation. And the second person who will be gracing us with his speech would be Deepak sir, who's our retired former dean and the head of Department of Art History and Aesthetics. And I don't think sir needs a lot of introduction, we are already familiar with him. So I would please like sir to please come and start. Good morning. आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप उधर बैठे हैं। मैं 1991 में चला गया हूँ। तब मैं भी कभी आपकी जगह बैठा हूँ। एक साल के लिए मैं पेंटिंग का स्टूडेंट रह चुका हूँ। बस हमारी जगह बैठा नहीं थी, तो आज एक नॉस्टैल्जिक भी थोड़ा सा फील कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ आने में 35 साल लगे हैं। तो भूपेन खट्टर की बात जो करेंगे, तो भूपेन खट्टर के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि वो तो रिनाउंड आर्टिस्ट है, इंटरनेशनल फेम है, और कभी से भी कुछ लोगों के लिए जुड़े हुए हैं। मुझे जो बात करनी है वो ये बुक की प्रोसेस थी। तो वो कैसे हमने बुक लिखी, बायोग्राफी कैसे लिखी जाती है, और उसमें क्या क्या दिक्कत जाती है और कैसे उसको हम ओवरकम करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मेरा प्रोफेशन बायोग्राफी, बायोग्राफर का प्रोफेशन, तो मैं कोई भी बायोग्राफी मेरे मन से नहीं लिखता, तो मुझे मन हुआ और मैं लिखना। मुझसे कोई लिखवा रहा है, आई एम बीइंग असाइन्ड जॉब। तो एक बार ये मिस्टर अमरीश कॉन्ट्रैक्टर जो यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने मेरा संपर्क किया और पूछा कि आप भूपेन खट्टर के ऊपर क्यों नहीं लिखते, उनकी बायोग्राफी क्यों नहीं लिखते, आपको कैसे। तो मैंने उनको बताया कि भाई इस तरह से मैं नहीं लिखता, मुझे काम दिया जाता है और फिर उसके ऊपर मैं काम चालू करूँगा। फिर मुझे ये हुआ कि आपका भूपेन से क्या लेना देना है, आप क्यों ऐसा इंसिस्ट करते हैं आपका कोई रिश्तेदार था। तो बोले कि नहीं, वो तो हमारा कुछ रिलेशनशिप नहीं था। लेकिन मेरे पिताजी यानी उनके पिताजी वल्लभदास कॉन्ट्रैक्टर, वल्लभभाई कॉन्ट्रैक्टर भूपेन, इंटीमेट फ्रेंड्स। मुझे और आश्चर्य हुआ कि ये आदमी अपने पिताजी की बायोग्राफी लिखवाने के बारे में नहीं कहता है, लेकिन अपने पिताजी के कोई दोस्त की बायोग्राफी के बारे में। तो मुझे क्या अजीब लगा। फिर हम मिले, बैठे और आगे बढ़ने का तय किया। तो मुझे तो ऐसा था कि भाई भूपेन सच ए नोन पर्सनैलिटी, और ये काम मुझे सौंपा गया 2016 में। तो ये पास करेंगे 2003, तो 13 साल हुए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हमको रेडीमेड मिल जाएगी और 1-2 साल में हम काम खत्म कर देंगे, क्योंकि उनके जानने वाले बहुत सारे हमारे आजू बाजू हैं, हम उनको मिलेंगे। तो पहले तो हमने एक लिस्ट बनाया कि किससे हमें मिलना चाहिए।
इट वॉज नॉट ए टिपिकल बायोग्राफी जिसको हेजियोग्राफी बोलते हैं, ऐसा नहीं था. यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी. तो हमने पहले लिस्ट बनाया कि भाई उनके साथ कितने कितने क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं. जैसे कि भूपेन ने कुछ कविताएं भी लिखी थी, कुछ नाटक भी लिखा था, स्टोरी शॉर्ट स्टोरी भी लिखी थी और भी कुछ रिपोर्ट लिखे थे, वो मिलने चाहिए. भूपेन के कैनवास कौन स्ट्रेच करता था वो उसको भी मिलना चाहिए. इस तरह से हमने एक लंबा लिस्ट बनाया. फिर हमने काम शुरू किया. शेख सर से हम सबसे पहले मिले क्योंकि he was the closest friend and he was responsible for bringing Bhupen from Bombay to Baroda. तो शेख सर ने कहा कि उनका एक गुजराती में फेरू नामक एक आर्टिकल लिखा है, फेरू का फेरू यानी परी. तो उन्होंने बताया कि आप ये आर्टिकल यूज कर सकते हैं. इट वॉज ऑलमोस्ट ए बायोग्राफिकल पीस, बट बायोग्राफी एंड बायोग्राफिकल पीस आर डिफरेंट. तो उन्होंने वो परमिशन दी. फिर हमने धीरे धीरे शुरू किया कि कैसे हम आगे बढ़े. तो आगे बढ़े तब पता चला कि हमें इंफॉर्मेशन कोई बेटर नहीं करेगा, हमें डिग आउट करनी पड़ेगी. क्योंकि सब लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं अरे भूपेन तो मेरा खास था. फिर हम आगे बढ़ते अच्छा तो आप कुछ बताइए. ऐसी कुछ खास बात नहीं है, खास था. तो ये मेरा कॉमन एक्सपीरियंस था बायोग्राफर, बायोग्राफर. हर एक लोग को जिनसे हम मिलते हैं तो उन्हें ये चाह रहे थे कि आप जो किताब लिखा है उसमें हमारा भी नाम हो. तो कुछ ना कुछ बोलते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ हमें मिल रहा नहीं है. वो बात भी है कि भाई किसी भी बायोग्राफी का जब हम आरंभ करते हैं तो बिल्कुल स्क्रैच से करना पड़ता है. लेकिन यहाँ हम ये डिफाइन नहीं कर पाए कि वो स्क्रैच कौन सा है, कहाँ से करना. आई वॉज रिफरिंग सो मैनी बुक्स रिगार्डिंग भूपेन. इंग्लिश में तो बहुत कुछ लिखा गया है उनके बारे में. तो गुजरात में जो एसपी यूनिवर्सिटी है उन्होंने एक प्रकल्प बनाया था ज्ञान विज्ञान श्रेणी करके, सीरीज ऑफ एनसाइक्लोपीडिया. उसमें दृश्य कला यानी विजुअल आर्ट का एक ग्रंथ है और उसमें मॉडर्न इंडियन आर्ट का एक अधिकरण लिखा है जो शेख सर ने लिखा. वो मैंने पढ़ा था कि क्या है. तो आप समझ सकते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया में जो एंट्रीज होती है वो छोटी छोटी होती है और मॉडर्न इंडियन आर्ट यानी वो केव्स पेंटिंग से शुरू करके फिर वेरियस फ्रेजेस मिनिएचर एंड ऑल दिस थिंग्स देन कमिंग टू मॉडर्न इंडियन आर्ट. तो बहुत छोटा सा पोर्शन रह जाता है उसके लिए. लेकिन वो छोटे पोर्शन में भी भूपेन के बारे में 2 पैराग्राफ उन्होंने मेंशन किए. तो वो इसलिए नहीं कि भूपेन की उनसे दोस्ती थी, क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया में दोस्ती नहीं करेगी. और इसलिए है कि भूपेन डिजर्व है क्योंकि मॉडर्न इंडियन आर्ट में भूपेन का जो स्थान है वो एनसाइक्लोपीडिया में भी 2 पैराग्राफ खींच लेता है. तो इट मीन्स अ लॉट. तो तब मुझे लगा कि ये स्क्रैच ये है, हमें जहाँ से बिगिन करना है. सो वी गेव एन ओवरव्यू इंडियन, पहले तो आर्ट, देन इंडियन आर्ट, देन द जर्नी ऑफ इंडियन आर्ट एंड देन मॉडर्न इंडियन आर्ट. And the chapter will end where there is a mention of Bhupen. ये हो गया हमारा पहला चैप्टर. मुश्किल आगे थी क्योंकि सेकंड चैप्टर से तो उसका जन्म और वो सब बातें आएंगी और वो हमें कहने वाला कोई नहीं था. आई थिंक 2016 में एक और बात बनी. भूपेन का एक रेट्रोस्पेक्टिव मॉडर्न टेक्स्ट है लंदन में हुआ. उसका नाम था यू कांट बी लॉर्ड, जो कि उनका बहुत जाना माना पेंटिंग है. और हुआ यूँ कि प्रदर्शित किए गए वो चित्र. तो कोई ब्रिटिश क्रिटिक था, उसने बहुत क्रिटिसाइज किया कि भाई व्हाट ही हैज डन इज द शिट. भूपेन ने सब कचरा बनाया है, इसमें कुछ है ही नहीं. ये उसने लिखा आर्टिकल. तो जो इंडियन आर्ट कम्युनिटी थी वो पढ़ रही थी और उन्होंने उसको 2 डाला. तो तू कौन कहता है ये चीज़ है, ये तो तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम अभी भी वो कॉलोनियल माइंड वाले हो, ऐसा वैसा हो. तो मैं कहता
कम्युनिटी भड़क उठी तो फिर से और एक ब्रिटिश क्रिटिक आया उसको करने के लिए और बोला कि भाई अच्छा तो अब ऐसा है कि हमारे पास एक और रोल का होगा जिसका नाम है भूपेन कि जिसके बारे में हम कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। तो ये बखेड़ा ऐसा चला तो मुझे बहुत मजा आया ये पढ़ने में, क्योंकि मुझे जितना भी मैं बातों से भूपेन को पहचानने लगा था तो मुझे लगा कि भाई भूपेन अगर होता है तो सबसे ज़्यादा एंजॉय वो ये कर यदि हाँ कुछ झगड़ा होना चाहिए यानी क्रिएटिव टाइप हो। तो मुझे लगा कि ये चैप्टर हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो जब ये शांत हुआ पूरा पकड़ा तो मैंने वो चैप्टर लिखा सबसे लास्ट, यानी जब हम गाड़ी बना ले उस ट्रेन एक कंपार्टमेंट जोड़ के तो हम पहले इंजन लाते हैं फिर जोड़ते जाते हैं और लास्ट में वो गाड़ी का डिब्बा होता है। हमने पहले इंजन बनाया और गाड़ी का डिब्बा बनाया, डिब्बे बाकी रहे। तो पहला चैप्टर लिख दिया, लास्ट चैप्टर लिख दिया, अभी बीच में क्या बहुत सारे स्कोप्स थे। अब भूपेन का व्यक्तित्व जैसे कि लोग जानते हैं, मैं कुछ नया कहीं नहीं कह रहा हूँ, अतरंगी था उसके वो वियर टाइप ऑफ थिंकिंग जिसको बोलते हैं जो कि उनके लिए नॉर्मल था। तो उनके दोस्त भी कई दोस्त भी ऐसे थे। तो हम उन्हें मिलने के लिए घबरा रहे थे। घबरा इसलिए रहे थे कि उनको पता चला कि भाई ये मेरे जैसा एक अनजान आदमी उनके एरिया में एनक्रोचमेंट कर रहा है। तो भाई पढ़ जाएंगे वो बोलते हैं, वो बोलेंगे हम नहीं बैठे भूपेन के बारे में लिखने के लिए, तुम कौन होते हो। तो मिलना तो था उनको। तो वी वर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर मीटिंग में, उनको अगर जब हम मिलने जाते हैं तो हम अपनी तरफ से सच प्रिपेयर होने चाहिए। तो उसमें बहुत टाइम लगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो चीज़ें मिलती गई। अब भूपेन में कई सारी राइटिंग भी करते थे, तो उनका जो गुजराती के जो लिटल मैगजीन थे, संज्ञा, कृति, उस तरह के जो छोटे लिटल मैगजीन, उसमें उनकी कृतियाँ छपती थी। तो वो सब हमने बोला मिला। भूपेन ने तो कविताएं लिखी थी और उनकी टाइप की एकदम उनकी शॉर्ट स्टोरीज होता है, नाटक, ये सब उसमें हमें मिला। वो करके मैगजीन उसमें वो सब हमने धीरे धीरे इकट्ठा किया और वो हम पढ़ते गए। तब हमारे आँख के सामने एक अलग ही चित्र निकल गया। ये उनका थिंकिंग है और उनके चित्रों में, उनके पेंटिंग में क्या बात है, उसमें और ये लिखावट में कुछ सिमिलरिटी है कि नहीं, वो सब हमें धीरे धीरे पता चलने लगा। और इस तरह से हम आगे बढ़ते गए, लेकिन ये पता चलने में हमें 8-9 साल लगे। मैं फेसबुक पर एक्टिव था उस वक्त, तो एक बार वो गुरु पूर्णिमा आई तो भूपेन का एक बहुत वेल नोन पेंटिंग है गुरु जयंती। तो मुझे ऐसा ही लगा कि चलो इसका आस्वाद करना है, ये चित्र क्या है। अब फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये अजीब लगेगा कि चित्र का आस्वाद क्या हो, तो देख के जो पता चलता है वो, लेकिन नहीं, बाहर के लोगों में उसके बारे में उनको विजुअल वो बहुत है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, रिपोर्ट नहीं कर पाते। तो मैंने ऐसे ही शुरू किया, मुझे मज़ा आया, तो मुझे लगा कि ये सीरीज करनी चाहिए। तो मैंने एक एक चित्र लेके भूपेन के पेंटिंग में आस्वाद फेसबुक पर करवाना शुरू किया। और एक दिन मुझे एक फोन आता है गुजराती में, तो वाला बोलो હું શું મદદ કરી શકું, यानी माय डियर व्हाट कैन आई हेल्प यू। वो कौन था? मनोज शाह का, जो ड्रामेटिस्ट है, वेरी वेल नोन डायरेक्टर। और मैं जो बताया कि भूपेन की जो इनर सर्कल है उसमें था वो। उसने बताया कि भाई मैं तेरी सीरीज पढ़ रहा हूँ, 3-4 तो मैंने पढ़े तो मुझे लगा कि ठीक है कोई लिखता होगा ऐसे ही। पहले तो ऐसा भी लगा कि भाई ये कौन अनजान है जो हमारे एरिया में घुसपैठ कर रहा है। लेकिन ये तेरा 6-7 में पढ़ा, अभी मुझसे रहा नहीं गया कि
चलो मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो पूरे सर्कल में हमारे दरवाजे खुल गए और फिर नौशील भाई से मिला, नौशील मेहता से और भी कई लोगों से मिला और धीरे धीरे एक और प्लेयर मुझे जानने को मिला। लेकिन ये सब करने में 8-9 साल, यानी यू कैन इमेजिन 8-9 साल बहुत लंबा पीरियड होता है किसी भी बायोग्राफी के लिए। इट इज नाइदर प्रोफेशनली बायोग्राफी। और हमारे जो अमरीश भाई जिन्होंने मुझे काम सौंपा था, वो भी बड़े धैर्यवान है, पुरुष है। मुझसे जब तक लोगों को पता चला कि मैं कुछ भूपेंद्र को लिख रहा हूँ, तो वो जो मेरे दोस्त है वो मुझसे पठानी उगलाने कर रहे हैं कि भाई तुम कब दे रहे हो भूपेंद्र को। लेकिन ये बंदा, उसने कभी मुझे ये नहीं कर दिया जल्दी कीजिए, बोलते हैं आप अपना टाइम लीजिए लेकिन पूरा कीजिए। तो हेड्स ऑफ टू अमरीश भाई। तो इस तरह आगे बात चली हमारी। फिर एक अच्छा काम जब हम करते हैं और बड़े पैशन से करते हैं, ऑनेस्टी से करते हैं, तो मजरू साहब का जो वो शेर है वो याद आता है, मैं तो अकेला ही चला जाने मंजिल मगर लोग आधे गए करना बनता गया। तो ऐसे ऐसे लोग को पता चला तो सामने से हमें फोन करने लगे, अभी हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, वो हम आपको देंगे, आप यूटिलाइज कीजिए अगर हो सकता है। तो एक धीरे धीरे विदेश राणा जो है सर्जन आर्ट गैलरी वाले, उन्होंने तो एकदम क्लियर बताया कि भाई मेरे पास जो है वो मैं दूंगा, लेकिन आपको और जो भी सहायता चाहिए वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। और जो भी का मतलब गुजराती में होता है आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल, तो जहाँ आपका काम अटक जाए आप मुझे बताना, मैं भी नहीं जाएगा। वो कह के भूल नहीं गए, क्या करता हूँ मैं। और अभी ये उसमें तो खैर जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब बुक तो उन्होंने पहले लॉन्चिंग का फंक्शन करके आर्ट गैलरी में रखा, यहाँ भी उन्होंने आगे भी और जाएंगे। तो इस तरह से अच्छे लोग जुड़ते गए। एक बात ये भी थी कि भूपेन की इतनी सारी कृतियाँ, यानी पद्य गद्य प्ले लिखा था उन्होंने, वो सब छपी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि उसका क्रिटिसिज्म भी कहीं ना कहीं तो हुआ होगा, किसी ने रिलेशन उसका किया होगा, तो वह एंगल भी हमें देखना चाहिए। तो मैंने पहले तो दो लोगों को पता होगा ऐसा मुझे लगा, इनसे पूछा कि ऐसा कुछ हुआ पुलिस के बारे में किसी ने कुछ लिखा ही नहीं, तो वही तो आया नहीं कि वो लिखता है, अच्छा लिखता है, लेकिन किसी ने उसके बारे में लिखा नहीं। पता नहीं, मुझे लगा कि हमें देखना चाहिए, शायद ऐसा हो कि किसी ने कहीं और लिखा और उसको बताया। तो we went on searching for that. Ultimately we got few of the things. शीर्ष पंचाल सर ने लिखा था उनके बारे में, मेरी कोटे का सर ने लिखा था, तो उनका जो नवली का संग्रह है, यानी स्टोरी बुक अगर मैं बुंदा, उसकी काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने इस दिन लिखा था। और अलग अलग एंगल से हम ये बुक को लेते गए। अब जब भूपेन की हम बात करते हैं तो उसका जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो एस्पेक्ट है, एक जिसके बिना हम भूपेन की बात अधूरी रह जाएगी, वो है होमोसेक्सुअलिटी। He was known for that. He himself proclaimed that. तो उस हिस्से को कैसे हम बुक में शामिल करें? अगर हम चाहे तो उसे ओमिट भी कर सकते हैं, रैपिंग करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हम एक ऐसे आदमी की बायोग्राफी लिख रहे हैं जो बिल्कुल अपने आप से ऑनेस्ट है। उसने खुद जो कभी छुपाया नहीं, वो हम क्यों छुपाए? तो हमने वो एंगल के बारे में पढ़ना शुरू किया, मिलना शुरू किया और फिर लिखना हुआ। अभी जैसे अमरीश भाई के पिताजी वल्लभ भाई पकड़ रहे, उनकी दोस्ती ऐसी थी कि भूपेन के कई पेंटिंग्स में वल्लभ भाई का फेस आप देख सकते हैं। Of course, it is a generic face, it is a common face, but it is said that that face is of वल्लभ भाई। तो भूपेन के आसपास जो भी उनके दोस्त थे, उनमें कई दोस्तों के नाम इस तरह के
लिस्ट में भी जुड़े थे, क्योंकि ये उनका संबंध है वगैरह वगैरह। अमरीश भाई ने जब मुझे कुछ लेटर्स दिए तो भूपेन और उनके पिताजी के बारे में उन्होंने एक दूसरे को लिखे थे अमेरिका से, वो मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा इसमें कुछ खास नहीं, इससे टिपिकल सोशल लेटर, कुछ मजा नहीं आया उसमें। मैं बहुत उत्साहित था क्योंकि 8-10 लेटर थे, वो क्वाइट अ थिंग। तो वो जब पहली बार उन्होंने दिया तब पढ़ा था, और फिर मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तब मुझे वो लेटर डिफरेंट लाइट में दिखे। आई कुड एबल टू इंटरप्रेट दोस थिंग्स। और फिर मैंने उसके बारे में ओपन एंड होमोसेक्सुअलिटी उसके बारे में आर्टिकल लिखा। मतलब जो लेटर्स उन्होंने दिए और आर्टिकल लिखा उसके बीच में 5 साल गुजरे। तो 5 साल में मुझे पता चला कि ये चीज क्या है। तो पहले तो मैंने अपने आप को थपथपाया कि अच्छा हुआ मैंने जल्दबाजी करके लिख नहीं दिया। और फिर जब हमने लिखा तो उसमें बट नेचर अमरीश भाई के पिताजी का भी जिक्र आता है और भी लोगों का जिक्र आता है। तो आई वाज इंसिस्टिंग भाई आप पहले पढ़ो, आपको अगर इसमें कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ उसमें कहना है या कुछ आप ऐसा चाहते हैं कि मैं ना लिखूँ तो आप पहले देख लीजिए। उन्होंने पढ़ा और कोई एक आध दो फैक्चुअल करेक्शन के सिवा कुछ उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि आपने जो लिखा वो बराबर है। तो वो चैप्टर भी थोड़ा करके चेंजेस या समय के रूप में गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बायोग्राफी लिखने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई एक प्रतिभा हमने स्थापित कर दिया और उसके गुणगान गाए जाए। वी हैव टू इंट्रोड्यूस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। उसका नेगेटिव पॉजिटिव जैसा तो कुछ होता नहीं है, वो तो हमारे ऊपर है कि हम कहाँ है, उसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव है। हमें जो है वो लिखना है, हमें बताना है। तो अलबत्त हम क्या सोचते हैं उसका रिफ्लेक्शन उसमें आता है। तो कई लोग ऐसे थे कि जो भूपेन की होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करना नहीं चाहते। हमने कहा ठीक है, आपको बात नहीं करनी तो, लेकिन जिन्होंने बात की और हम जो समझे वो सब हमने लिखा इसमें। और एक बहुत एक ऑब्जेक्टिवली लिखने का प्रयत्न किया कि भाई जैसे उसमें मेरा अगर कुछ है टेबू है या जो भी है फीलिंग है वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन एक आर्टिस्ट क्या सोचता है उसके बारे में पता चलना चाहिए। तो इस तरह से जैसे मैंने बताया कि इंजन और गार्ड का टकरा बन गया और बीच में फिर ऐसे ऐसे अलग अलग डिब्बे बनते गए। तो हमको पता था मैप ऑफ द बुक क्लियर नहीं, क्योंकि कहाँ कहाँ क्या लेना है। तो जैसे जैसे हमें चीज मिलती गई वैसे वैसे हम एक चैप्टर तैयार करते गए। कंपेयर करना तो फिल्म के शूटिंग के साथ कर सकते हैं, क्योंकि फिल्म शूटिंग में क्या होता है स्क्रीन पे पूरा आपके पास होता है, लेकिन शूट उसके ऊपर भी नहीं होता। आप आखिर सिनेमा पहला शूट कर देते हैं, बीच में जो अवेलेबिलिटी उसके हिसाब से करते हैं और लास्ट में सब एडिट करके आप लोड करें। लेकिन यू हैव द होल पिक्चर इन योर माइंड। ये बुक का भी कुछ ऐसा ही था। तो हमने अलग अलग डिब्बे बनवाए, बनाते गए, जोड़ते गए और आखिरकार 9 साल के बाद हमें लगा कि अभी ये बुक रिलीज करने जैसे कुछ चीज़ ऐसी भी हम नहीं शामिल कर पाए, वो भी हमें पता है। अब जैसे कोई भी भूपेन को जानने वाला है तो वो हमसे पूछेगा कि भी आप अतुल बढ़िया से मिले, क्योंकि हावों का अतुल भाई अपने इन्फ्लुएंस बाय भूपेन। तो हम नहीं मिले हैं, रादर हम नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि अतुल भाई से जब हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि हाँ जरूर हम मिलेंगे। उसके बाद उनका इतना बिजी शेड्यूल रहा, तो कहीं ना कहीं विदेश में जाना हुआ, ये वो, तो हम नहीं मिल पाए उनसे। उन्होंने मेंशन किया है, क्योंकि हर एक बुक की एक टाइम फ्रेम होती है, उसमें एक करना जरूरी होता है। हालांकि इसमें टाइम फ्रेम से तो हम बहुत आगे निकल गए थे, 9 साल पहले लॉन्ग पीरियड। जैसे आप देखिए दूसरे एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, 9 साल कितने होते हैं। आप फाइनेंस में पहले साल में ज्वाइन हुए तो 4 साल है, 4 और 2, और आप पीजी करके भी बाहर निकल गए तब ये बुक नहीं बनी। इतना ये होता है। मेरा जो
तीसरे में दूसरे फर्स्ट और सेकंड सेंटर में बराबर मैट्रिक में आ गया होगा। तो इस तरह से जो बात नहीं हम लिख पाए उसका भी हमने जिक्र तो किया है। और हर एक बायोग्राफी के बारे में जो होता है तो मैं इधर भी कहता हूँ क्योंकि कोई भी बायोग्राफी है वो कंप्लीट नहीं होती, वो कंप्लीट हो ही नहीं सकती, उसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए वो क्या है। दूसरी बात, ये बायोग्राफी में हमने इंडिकेशंस दिए, तो ये आखिरी पहली है लेकिन अल्टीमेट नहीं है, आखिरी नहीं। आगे अगर किसी को भी भूगोल के ऊपर काम करना है ज़्यादा कुछ एक स्पेसिफिक एरिया में, तो उसको यहाँ से इंडिकेशन जरूर मिलेंगे। तो हमारा प्रयास ऐसा रहा है। आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू long back, 10 years back, I was invited by Trivedi to speak on Bhupen Datta's paintings and his short stories. The program was in Chandra Auditorium. And after the next day, Amrit Bhai came to my house. He said that I heard your lecture and I want my father's biography to be written. So will you be able to help us? I was more than happy to share whatever I could. But at the same time, when he spoke about the plan, I was a bit skeptical. Because I was wondering that what exactly was his concern with the biography, as the writer himself wondered about it. I asked him that what exactly is the relationship between Bhupen Bhai and you, and he told me the same thing, that his father was Bhupen Bhai's friend. Vallabh Bhai was a known figure in the art world. Shankar Bhai and Vallabh Bhai were known as Bhupen Bhai's friends. And when I came to know that he is Vallabh Bhai's son, I was a little surprised. I was pleasantly surprised that a person is courageous enough to put forward the things which are very important in understanding the creative journey of a genius. And that is why I happily accepted that. But I always noticed that most of the biographies which are written are eulogies. As Devendra Bhai rightly pointed out, कि वो आदमी कैसे great था, तो कितना great था, ये बताना किसी को हम biography. And particularly in Gujarati, I am not a great student of Gujarati literature, but I have read Gujarati fairly enough. And I realized that in Gujarati there are hardly any good biographies. Dinkar Joshi is considered to be one of the great biographers of Gujarati, and his biographies of Arilal Gandhi, Mahatma Gandhi's son, was converted into a film also. Gandhi was based on Dinkar Joshi's novel. His biography of Muhammad Ali Jinnah is also a celebrated book. But there also I could see that these books have been written from a particular perspective. And I was afraid that if Virendra Bhai also does the same thing, tries to write Bhupen's biography from a particular perspective, focusing on his homosexuality. So I was a bit skeptical about the whole process. Then for a long time, we did not meet each other. What was perhaps going on, and I don't know what is. But then, all of a sudden,
actually the title is Bhupen Kata, but the subtitle is आंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त पद्मश्री सम्मान की विभूषित चित्रकारना जीवन रंगोली झलक, which I found in the school books. I thought I don't know what exactly I have done to it because misunderstanding Bhupen is very easy. Bhupen was always misunderstood. Bhupen painting were always misunderstood. And I was afraid that again in this biography, if the misunderstanding continues, it would be disastrous. But as I started reading it, when I started reading it, initially again, I was utterly disappointed because he went on telling the different events from Bhupen's childhood, then his school days, then his early college days, his friendship with Sunil Kothari, and then his arrival in Baroda. Then he heavily borrowed from Usha Khan Mehta's and first 10-15 pages, at least Bhupen's biography is being written in Gujarati, that is not a bad thing. So I was just going further. And then at some juncture, I realized that the CPD had very judiciously sequenced on it. He has borrowed a lot of material from so many sources, but the way he is presenting it is very interesting. Bhupen's personality is gradually building, like a sculptor, is gradually building up the personality, and Bhupen is coming into masses. Bhupen is coming out in tangible terms. And there I started reading that biography more possibly with literature. After you read that portion, you will realize that how Bhupen is very interesting. You know, the people who have seen Bhupen's work, there are very, some students who perhaps have not seen Bhupen's work at all. When they see it, when I saw it for the first time when I was a first year student, I kept wondering that why this person is considered to be a retarded. He can't even draw well. And once, Bhupen was a very interesting person. Sheikh Bhai was my teacher. And once Sheikh Bhai was telling me that whenever we used to criticize somebody's drawing, if we wanted to comment on somebody's drawing, we used to say, Bhupen karta nahi tha. ये drawing तो Bhupen से भी करता है. ऐसे हम लोग कमेंट पास करते थे. फिर Bhupen भाई के साथ बाद में दोस्ती हो गई. वहाँ पर भी हम लोग Bhupen मैंने एक बार एग्जीबिशन में विजिट हुए. क्यों था इसलिए and then in style again. And then the teacher was intended. मजाक कर रहा हूँ मुझे उसका एक सिग्नल दे दूँ. कैसा लग रहा है? उनके पूछने पर से पता चल जाता है कि मजाक एक्सपेक्टेड है, इनवाइटेड. तो ऐसा है ना वो अच्छा नहीं होता है. वो कहता है राजा नंगा है. तो सब लोग राजा के कपड़े की तारीफ करते हैं. एक बच्चा कहते हैं राजा तो नंगा है. तो वो बच्चा मैं कह दूँगा कि राजा नंगा है. खाली कहो then Bhupen was invited for ceramic camp, perhaps in Australia, I don't remember. Of course, Bhupen was not conversant with the technicalities of ceramics, and he sought help from the teachers of ceramic department. Akhil was also there. And then he met me out. मैंने कहा आप ceramic में हिस्सा ले रहे ceramic का. And then वो अखिल से पूछ लिया है 2-4 टेक्निकल वर्ड्स क्या लेना सोचो व्हाट इज he could take humor and he could cut humor at any वो जो ये था so that particular thing is very important in the development of Bhupen's idiom. मुझे ऐसा लगता है कि he was not a talented person, if some art educator would have seen Bhupen's work, he would not have perhaps given IB school in finance college. He was not a gifted person, he was not a talented person. He certainly did have the aptitude for art. So, and that is why he was always mentioned as a self-taught. Surprisingly, Bhupen was not a self-taught. He attended classes in Mumbai. And he also was a student in the Academy of Fine Arts. He did a course in art criticism. He was not a
self-taught artist, but he was an artist who did not have faith in the field which he learned. I think this is basic difference. That he learned art in a traditional way, in a conventional way, but he did not have faith in it. Now see, this is very interesting that he cannot do the things which are being taught to him, but he has a faith that he can be an artist. And not only the faith, the art educators would not have accepted him as an artist. But he is keen to pursue a career in art. This is very interesting. Okay, a person who doesn't have a basic understanding of problem, a person who doesn't have the basic skills as the world believes in decides to pursue a career in art, leaving a very lucrative business of chartered accountant. Many of you know that Bhupen was a qualified chartered accountant. He had a good job. He left that job and decided to pursue a career in art, who is not at all equipped with the commonly known skills of art. I think this courage is really, really surprising. But somewhere he was aware that he made mistakes. I really feel surprised that Bhupen decided to make a career in art because somewhere he must be knowing that I know art. My art is different, but it is a valid way of learning art. So I think what you have done, you have included his writing. You have included his writing. Actually, this book has been divided into 4 sections. Even I was a little skeptical about the sections also because it was a very conventional orthodox way of putting the So one of the sections is on Bhupen's life. We have not published his short stories, his plays, his creative writing, except for those 2 poems which he has written. But this writing is very interesting. The earliest writing is about the Gujarat military division. The Gujarat military division which took place in Ahmedabad. He has written a review of that exhibition in a very critical way. Then there is another article on Lalit Kala as an institution. And he has severely criticized Lalit Kala as an art institution. Then there is a very interesting article on the art of Rasika, the art of Kanu Desai. Kanu Desai was perhaps the most popular artist of India, one of the popular artists of Gujarat at that time. He was also an art director for many films, and Kanu Desai was a peak in himself at that time. Bhupen wrote a long and vehemently critical article on Kanu Desai. Because this is a study. He is attacking, he is revolting against the establishment. He is criticizing the establishment. He is almost condemning the establishment so that he is being taken over. I think Bhupen has done it very strategically. I will not call it cunning. It is a very wise strategy which he has done. Because he wanted to show that whatever I have been doing is not Kalakanti. This naivety is intensive. The naivety in my art is my tool. It is not just an absence of skill. I know art, I know about art, I know about the excellence of art, and he proved it through these articles. Established himself as a person who understands the art and art activities, art movement, and then he started writing about it. Immediately after this, he has written a very interesting travelogue, Kota Undeo France. And there, the real Bhupen starts. There, he is describing himself as James Bond. और फिर वहाँ की वो जो सारी description आ जाती है. Now it's a very interesting travelogue, which is totally different than the travelogue which we know. Now here, Bhupen starts reading. Bhupen starts taking assuming his. And then a couple of poems, and this is all these articles have been published in journals like Hindu or Kshitij, which were edited by a great critic like Sudhir Joshi, or the people involved in this activity where people like Professor Kulani State. So he was in the company
Maya Karak wanted to establish that the naivety in my work, the naivety in my fear, the naivety in my writing is not the real naivety, it is an actual naivety. It is an intentional, it is a deliberate, purposeful naivety which I am using as my tool. And there, movement is being taken very seriously by the I remember in the second year, third year students, me and my friend, who is known more, who also taught in this faculty, Pratap Mase, who taught in the Department of Applied Arts. We were enthusiasts of Gujarati literature. I'm not a Gujarati, but I was very interested in it. And he showed me a very interesting film review of a film called Anmol Mokhi. Anmol Mokhi was a film of Jitendra and the popular actress Bali. Now you can imagine what kind of film it must have been. It also had a lot of underwater shooting. And you can wrote a review with complete, I said, how Babita, how beautiful Babita looks and how Jitendra comes up and like Ulfa was thrilled to see that film. All that thrill was his film. Obviously, now people know Bhupen as a serious team, as a person who has a sound understanding of art. And when he writes this kind of criticism, people take it. Now people know what to do with this criticism. Otherwise, if Bhupen would have published this piece of writing in Loksata or on Divya Bhaskar, people would have laughed at it. But now people know that what perspective is to be assumed when reading this piece of writing. You can, because I think the people who are the students of aesthetics know that unless you do not disclose your intention, your work of art cannot be taken seriously or it cannot be understood properly. I remember Ketan Mehta made a film called Dagli in India, which was a take, which was a harsh criticism on the masala Hindi Bollywood film. But there was no signal to say that this is a critique of masala film. Many people saw it as a masala film and admired it. So this happens. If you do not give a signal to your reader that what you are doing is not serious. What you are doing is a kind of I can't tell you a perfect word for it, but I am making fun of them. And you have to give us the signal of sarcasm. People should know that this is sarcasm, otherwise you can be disturbed. I think by doing that serious writing in the beginning and then by switching over the idiom, Bhupen gave that signal. That now whatever he is trying to do is sarcasm. It is not serious. So, and the other thing is, we use the word Aiva. Aiva is the principal answer, the principal sentiment. There are people who use sarcasm as a part of their expression. It is Subramanian or unfortunately, all of you have forgotten a great painter from this very institution, B.R. Patel. B.R. Patel is a very, very important painter. I don't know why people would only talk about him today. But B.R. Patel also had that kind of sarcasm in his painting. But that sarcasm was like a spice. It appeared and disappeared. So it came over there, but that was not used as a staple feeling of their work. Bhupen made it into his item. Bhupen used sarcasm as the central concern, as the central expression. That is the basic difference. I don't know how many of you are students of sculpture, but there is a sculptor called Bruno, a neoclassical sculptor. And if you see his sketches, they are as good and as fresh as Roga's sculptures. But Roga realized that this handling can be his final expression. Bruno perhaps did not realize it. And he finished those sculptures further and spoiled them. So that perhaps happened. There are so many people who sarcasm in their painting, but Bhupen perhaps is the first person who made sarcasm his symbol, his major concern. And that is why Bhupen's tax totally different from the rest of the. For others, it was the Vichariva. For Bhupen, it
it was just hype. So, the other thing I am very admire people that he is an extremely intelligent person. A genius knows himself and knows his strengths and weaknesses so well that you can realize that the elite class of any society can be used very intelligently. Perhaps you know what is Stockholm syndrome. Stockholm syndrome is the phenomenon where you start appreciating the person who insults you, who tortures you. You start appreciating that person, you start following that person, you start admiring that person. I think you can exactly use that Stockholm person for the elite Indian elite. He started mocking the Indians. He started, it's very interesting. It is almost at the level of religion. He humiliates Indian elite. He laughs at Indian elite. He mocks Indian elite. And the Indian elite started admiring him more and more. Perhaps he knew that the elite always succumbs to self-glory because they want to retain their cerebral control. To retain that cerebral control, people succumb to that kind of self-glory, and Mughal used it very interesting. As Mughal started mocking the elite started liking him more. This is very interesting. And of course, he was not doing it for one. He had reasons to do that. He had valid reasons to do that. And obviously, what he produced was that which was being done in the realm of India at that time. So, his creative writings, his poems, actually I can go on and try to be as deep as possible. But he is a person who understood the virtue of irrelevance. Irrelevance. Normally in the Indian society we have been taught relevance. हमको आज्ञा करता बहुत समय बड़ों की आज्ञा करो, बड़ों का आदर करो, आज्ञा करो. Actually many times कई सारे बड़े उस लायक होते हैं. तो वो irreverence जो होता है वो औचित्य जो होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. मुझे लगता है कि भूपेन को औचित्य समझ कि he could understand the virtue of irreverence. He was irreverent to everything. He didn't respect anything. He didn't respect tradition. He didn't respect love. Rather, he had respect for nothing. And that is why his work had broken all the rights. When the British criticized Bhupel, perhaps he was criticizing it because Bhupel's idiom was similar to some of the Hitler's idioms which worked in Britain at that time. Perhaps he was thinking that Bhupel shows me I really fasting, but he didn't understand that the content of Bhupel's idiom was religious. And perhaps he didn't understand the gravity. He criticized it because he didn't understand it. Johnny Emmel is an Indian, not British. So he's the product of this fact. Johnny Emmel said, he's right, that why was the British PC? Now we will try to understand own terms. Okay. So, Hiren Parekh has, he does not say all these things. But what he has done, he has collected all the minute details from Bhupel's life and compiled them together in such a sequence that all these things are automatically used. He doesn't spell them out, but you come to know that this is how it will develop as a data. He has documented the later developments also. Actually, Bhupel's later life. Bhupel's life was extremely good. Initially, he was not recognized at all. He came to Baroda, mocked at, people laughed at him, his own friends used to drag him. Gradually, he found his idiom, he could establish his idiom. For the next 10 years, Bhupel was a well-known person. People started thinking seriously about Bhupel, but he was not a successful painter. And all of a sudden, when he went to Britain, he found his
very interesting that this is the period when he traveled to Europe, he realized that homosexuality is not exactly the same. His sexual preferences are acceptable all over the world. Why should I be apologetic about it? And when he started accepting it, when he started acknowledging his position, that is the period when, and very surprisingly, though the Indian society is very, very orthodox society, at least the art community and the people who are interested in art very healthily accepted. So, but that is the period when people started having so many problems. It was the problems of the health problems. And in the next 10 years, there will be its health decline and its loss. So here, the biography of Bhupendra ends. The section 2, I think, it ends with his death. Dheeranbhai has described those few months in a very sensitive manner, very compassionate manner. It's worth reading. But the second section is more important, where he tries to trace Bhupendra's personal relationship. As I told you, that Vallabhbhai, there is a very interesting story in the book, that once Bhupen got down from the train at Surat, and Vallabhbhai was standing on the platform. And Bhupen tells this story, Vallabhbhai also tells this story, that he ran to that person and he said, Vallabh, you recognize me as Bhupen. They never met before. He recognized Vallabhbhai, spoke to him, and they became friends the next month. Vallabhbhai was about 20 years old, or 50 years old, quite old. Then there is another person, Shankar Bhai, who was also quite old. Bhupen was always friendly with very old people who were 50 years old, 20 years old. And this relationship doesn't have a kind of sexual preferences in a different way. But this relationship is very curious because there was hardly any physical attraction. Well, these people were not very attractive people. Rather, most of them were almost towards the end of their life. So Bhupen looked after them. Bhupen helped them. Bhupen served them. It's very interesting. And what kind of attraction Bhupen had for these old people is very surprising. Shekhar has written in details about Bhupen's wealth and Bhupen's attitude toward. I think that's a very interesting part of Bhupen's personality. And Dheeranbhai has written about it in a very curious way, without justifying Bhupen, without criticizing Bhupen. I think the indifference which you have mentioned, but that indifference is not a disconcern. You are sympathetic to it, but at the same time, you do not want to indulge in any kind of so, what if you want to give a statement, you rely mainly on the comments of his friends. You don't make it. I think you have respect with a great respect and really appreciate. I think I some of those, there are so many things which can be said. But I also appreciate that with acceptance of the intense relationship with his father and his wife. And what I did appreciate is that his respect and sympathy towards this relationship. The respect for his father, the way he tries to understand his father, I think it is extremely valuable. You really deserve congratulations for that. And the art community will be always thankful to you, people who really want to understand Bhupen and Bhupen's work, for giving us the correct picture of the outcome of this. I think I've said most of the things I wanted to say, but the emotional
sections. But after completing the book, I felt that there were many books. And each section has a different. Every person, you know that all of us have three personalities. Every person has many persons in it. But Bhupen is a person who retained this religion. He retained many books in it. Those letters which he has written to his friends. Actually, people who understand Gujarati must read those letters. Like Amir Ambala is one of the well-known translators of Gujarat, all of you. He has written letters to Amit Ambala. Now, Bhupen was not married. He is writing Amit Ambala that your daughter is getting married, and in your son's marriage, I gave you so many good gadgets. मैंने उसको सोने का ये दिया था, मेरे लिए रिपीट किया नहीं, तो मेरे लिए एक सूट बनवा देना, और ये जो कि मैं कहा देखा शादी कब होगा, वो मेरे बेटे तो थक जाते हैं तुम्हारी बातें करते हैं, कभी कभी तो तुम्हें पापा कह देते हैं, मुझे पापा नहीं कहते हैं, तो and these letters are amazing letters. Actually, and the most interesting thing is, some of those characters are real characters, and some of them are imaginary characters. So if somebody reads those letters, you will be extremely confused because the interweaving is so amazing that it can lead to very serious misunderstanding. So Bhupen was assigned here, and I think very skillfully you have tried to look into the layers of this personality. Bhupen has retained those many books in his personality. They are nominally don't know all those that they merge together. Bhupen doesn't allow them to merge together, and that is why for those people who think that there is no Bhupen, this book will be a new introduction. It will help them to understand Bhupen and Bhupen's art. In the last chapter, we have tried to comment on some of his works of art. The prints are very small, and the description doesn't really correspond with them. And since a lot has been written about Bhupen's art, I think that chapter may not help us much, particularly the contemporary, because we know about Bhupen and Bhupen's art a lot. But barring that, the way we have tried to understand Bhupen will help us understand Bhupen's art. Thanks a lot for giving us such a deep insight on the book and on Bhupen Bhupen's life. Now I would like to request Hitesh sir to please say a few words. Anyway, when I joined here, we found us college or like before we left. So after that, I think 98 में first time मुझे Bhupen का मिलने का chance मिला. मेरी last 5 years में सबके साथ था. उनका जो भी coordinate करना, शायद कुछ response, letters उनका जो भी project में लिखना, कुछ भी काम है वो सब मेरे संभाल करना last 5 years. और that time I know that उनके बहुत सारे correspondence David Hockney, फिर ऐसे Timothy Haynes के साथ regularly correspondence चलते थे. वो समय 98 तो वो मैंने पोस्ट किए थे और अभी last 10 years से मुझे पता चला कि David Hockney कौन है, Hockney कौन है. So last 10 years से मैंने भी कुछ David Hockney के काम कुछ कलेक्ट करना स्टार्ट भी किया है. So उनके बारे में थोड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूँ आपको जो Bhupen खट्टर ने बताया था. एक्चुअली 95 में उनको एक पेपर आया था नेशनल गैलरी लंदन पोर्ट्रेट गैलरी से और आई थिंक उनको एक सलमान रश्दी का पोर्ट्रेट बनाया था. तो पेपर आया था वहाँ से और इन्वाइट किया था लंदन आने के लिए. आई थिंक जो एटमोसफियर था बहुत खराब था बिकॉज ऑफ दैट सलमान रश्दी के बुक के कारण पूरे वर्ल्ड में बहुत डिस्प्यूट चल रहा था. सेटानिक वर्सेस बुक था उसका नाम. तो वो पीरियड में उनको इन्वाइट किया गया Bhupen खट्टर को लंदन. तो Bhupen खट्टर जस्ट वहाँ पे पहुँचे और लाइव पोर्ट्रेट बनाने थे उनको सलमान रश्दी सर
तो जैसे वहाँ पे पहुँचे और इमीडिएटली कमांडो ने उनको देखकर एक ऐसी जगह पे कॉम्पिटिशन जगह, क्योंकि दैट टाइम एक ट्रेन था उनके पे भी सलमान रश्दी सर, और बिकॉज ऑफ दैट सिक्योरिटी रीजन तो उनके साथ 10 कमांडो के साथ क्विक खड़कर वो पोर्ट्रेट बनाने निकल पड़े। तो उन्होंने पूरा ये स्टोरी इतना इंटरेस्टिंग वे में बताया कि मैं तो जा रहा था, मेरे पीछे 2-3 सोल्जर्स कमांडोज और सभी के साथ, और पेंटिंग बना रहा था मुझे। अभी आप सोचो कैसे पेंटिंग बनाएंगे, और लेके गए ऐसी जगह पे, बहुत एकदम कॉम्पिटिशन जगह थी, वहाँ पे बेसमेंट में लेके गए, वहाँ पे अंधेरा था, वहाँ से फिर और आगे लेके गए, और इसके बाद जब निकले और वहाँ पे सलमान रश्दी सर बैठे, और फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा स्टार्ट किया, और मैं पूरा हाथ से लेके कुछ काम ही नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ दैट कि कमांडो के सामने वो पोर्ट्रेट बना ही नहीं सकता मैं। तो उन्होंने 2-3 बार उनको बहुत जो एक्सप्रेशन चाहिए वो हो नहीं सका, और फिर बाद में उन्होंने रिफ्यूज किया सर को कि सर आई थिंक इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि एक कमांडो के साथ पेंटिंग बनाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। आई डू वन थिंग कि पूरा पेंटिंग इंडिया जाके मैं बना के फिर आपको, तो उन्होंने एग्री करके फिर वो इंडिया में पूरा पोर्ट्रेट बनाने के बाद वो फिर नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट जो लंदन में है वहाँ पे उन्होंने रखा है। तो इंटरेस्टिंग बात तब हुई कि जब 2015 में टेट मॉडल में उनका शो था, रेट्रोस्पेक्टिव शो, और मैं भी वहाँ पे पहुँचा था लंदन में, और लंदन में पहुँचने के बाद वो शो चल रहा था, एंड सडनली आई मेट सलमान रश्दी, और सलमान रश्दी सर से जस्ट ये पूरा स्टोरी बताया मैंने, तो वो इतने हंसने लगे, और इतने वो कि भूपेंद्र खट्टर जो वेरी बोल्ड पर्सन और वेरी इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, और बहुत सारी बात हुई। तो भूपेंद्र खट्टर की एक बहुत बड़ी खासियत थी, वेरी बोल्ड, और कहाँ से भी वो किसी से घबराते नहीं थे, किसी से भी। एक आदमी से घबराता था, वो उनका खास आदमी था पांडु। क्लास 14 ईयर्स से जब बॉम्बे उन्होंने छोड़ा तब से लेके बड़ौदा तक वो उनके साथ रहे, और आज भूपेंद्र खट्टर का 22nd और 23rd डेथ एनिवर्सरी। तो पांडु सुबह में जो बिकॉज ऑफ 5 इयर्स में रेगुलर देखता था, वहाँ पे जो एटमोसफियर उनका जो पूरा सर्कस था घर का, पांडु, उनकी वाइफ, उनके 3 लड़के और भूपेंद्र खट्टर, ये पूरा परिवार था। और भूपेंद्र खट्टर जो भी अर्न करते थे वो पूरा ये फैमिली के लिए जाते थे। तो पांडु का रेगुलर रूटीन सुबह में 6 बजे 7 बजे भूपेंद्र खट्टर से 100 रुपीज़ लेना, रिक्शा पे बैठ के रोटी पीना, और रोटी पीने के बाद वो अपना खाना पीना, चाय पाई, इसके बाद सर्व करते थे सबको। आप सोचो इतने बड़े आर्टिस्ट को जो डर लगता था, वो पांडु को पूछे भी ना खाना कौन सिलेक्ट कैसे कर रहा है वो भी नहीं पता। पांडु पूछते, पांडु तने सुखाओ छे, पांडु के आज जो बटाटो साग, तो वो बटाटो वो बनता था। तो भूपेंद्र खट्टर जनरली जो लोअर जो नानी वाला है, कोई बस्ती वाला है, और जब भी उनके घर पे जाएंगे तो आधा घंटा बैठ के उनके साथ बात करें। और इनका जो पेंटिंग के अंदर भी आप देखेंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे वो घड़ियाल वाला, फिर जलेबी वाला, वो सभी सब्जेक्ट उनके बहुत फेमस है। एक टाइम ऐसा हुआ था कि कुछ पेंटिंग बनाने के लिए सुबह से मैं तो 8 से 9 बजे उनके घर पे जाता था, और शाम को 5-6 बजे आता था, जस्ट फॉर 5 इयर्स। तो एक बार पेंटिंग बहुत ही अच्छा बन रहा था, और उन्होंने कहा जाके वो नीचे वॉशरूम में जाके इसको वॉश कर, मैं थोड़ा हो गया कि शॉक कि क्यों सर इतना अच्छा बन रहा है। तो वो सर ने जो बोला वो मानना था, तो जाके वॉश करके आया, फिर थोड़ा पेंट लग गया, फिर से वॉश करने के लिए गया। तो कम से कम मुझे पता है तब तक 15 to 20 टाइम्स मैंने वो पेंटिंग वॉश की, और वो एक्चुअली एवरी टाइम ही लर्न समथिंग डिफरेंट थिंग्स कि वॉश पेंटिंग कैसा होता है, क्योंकि वॉश टेक्निक्स बहुत कम होती है, इधर मैनुअल स्कूल में ज़्यादा होता है वॉश पेंटिंग। तो वो पूरा वॉश टेक्निक के बारे में पूरा समझाया कि देखो ये तो कितना मस्त आ गया, अभी जो मुझे चाहिए वो मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे उनके साथ बहुत ही अच्छे टाइम हुए, और सबसे बड़ी बात कि आई एम सो लकी दैट कि
इतने बड़े आर्टिस्ट और डाउन टू अर्थ उनका नेचर, वो तेजी सर, जयराम पटेल और भूपेन खट्टर सर के साथ बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला लाइफ का, और बहुत सारी मेमोरीज लेके फिर अभी आगे हम बढ़ रहे हैं. सो थैंक यू वेरी मच. Amish Conductor sir, please say a few words. Namaste. So प्रथम the Bhupen is Bhupen and Bhupen was Bhupen. Myself, Vallabhdas, contractor of સૌથી નવો ગુજરાત દરબારાની પટેલાને ભરૂચ ખાતે આવેલી છે તેનો સર્વિસ કરતો હતો અને ત્યાંથી રિટાયર થઈ 2013 ડિસેમ્બર મહિનામાં હું વડોદરામાં સ્થાયી થયો. મારા પિતાશ્રી અને ભૂપેન કાકા બે વચ્ચેની જે મિત્રતા હતી, નિસ્વાર્થ ભાવે લોકો એમને મળતા. આ મૈત્રી હું એક દાપણ કરી રહ્યો છું જે મારા સ્વપ્નમાં જે પ્રભુ કૃપાથી પૂર્ણ થઈ. એનો નિમિત્ત બન્યું એનો મને અપાર આનંદ છે. મારા પિતાશ્રી અને ભૂપેન કાકા હતી મિત્રતા એક સિક્કાની બે બાજુ જેવી. રોજ મળવાનું થાય, 3-4 વાર ફોન દિવસનો હોય જ. અને મારા પપ્પાને ભૂપેન કાકાના સગાવાલા મિત્ર વર્ગનું સાહિત્ય જગતના એમના જે મિત્રો એ બધા મારા પપ્પાને બધો જાણે, બધો એડ કરે. અને ભૂપેન કાકાના કોઈ પણ નાના મોટા પ્રસંગો હોય એ પ્રસંગોની અંદર મારા પપ્પા અચૂક જ એમને આમંત્રણ મળતું. ભૂપેન કાકાના આમંત્રણ મળે એટલે મારા પપ્પા અચૂક જોડે હોય જ. આ રીતે લોકોની મિત્રતા. મારા પિતાશ્રીને જીવનના અંત સુધી એવું જણાવ મારા પપ્પાને સાચવ્યા છે, આર્થિક સહયોગ પણ એમને આપેલો છે. ફાઇનાન્સ જે કંઈ થતું એ ચલો વેચાય અને પ્રદેશનું આવવા જવાનું એ બધા ફાઇનાન્સનું બધું જ હિસાબ કિતાબ મારા બાપા હતા. દર મહિનાના ભૂપેન કાકાને ખર્ચવાના પૈસા મારા પપ્પા જ આપે. વચ્ચે જો ઉપાડ જોતો હોય કે મેળવવો હોય તો મારા પપ્પા પાસે પરમિશન માંગે. ભૂપેન કાકાના પૈસા એમના જ પૈસા છતાં પણ એ માગી ન શકે. આટલા બધા પૈસા બધા આવ્યા હતા અને પાછું શેનો માગે? એટલે એટલી બધી ગાઢ મિત્રતા. અને પરદેશમાં જાય ને તો પણ મારા કાકા છે એકાઉન્ટિંગ બધું રાખે, ભાઈએ પહેલો હિસાબ રાખે. મારા પપ્પા ખાસ લખીને ગયા કે ભૂપેન કાકાના ચિત્ર, ભૂપેન કાકાની બેંક બેલેન્સ, ભૂપેન કાકાના કશા પર આપણો કોઈ જ અધિકાર નથી. એ એમનું છે ને એમને બધું આપણે આપી દેવાનું છે. તો એમને બીટમાં લખ્યું. મારા પપ્પા ખોટા ખર્ચા કરવાના ભૂપેન કાકા બે જગ્યાએ થોડું ચાલ્યા કરે. અને પાંડુ રોજે રોજ ખાલી જ હોય પૈસામાં, જે હિતેશભાઈએ વાત કરી એ પ્રમાણે. અને પાંડુ તો કોઈ દિવસ મારા પપ્પા પાસે પૈસા માગે જ નહીં, એની હિંમત જ ના કરે. ભૂપેન કાકા ખુદ પોતાના પૈસા માગવા માટે બીજે ફેર માગવો એટલે સંકોચ અનુભવે. અને કે માગું કે ના માગું 4 વાર વિચાર કરે પછી કંઈક પ્રપોઝલ કે સારા લોકો હોય ત્યારે વાત કરે તો બધો કે કાકા પૈસાની જરૂર છે ત્યારે તમને આપી દે. એવું જેના શબ્દ રહે, જીવંત રહે, એ માટે આ ઘણા વિચાર વિનિમય પછી મને આ પુસ્તક લખાવવાનો વિચાર આવ્યો. ભૂપેન કાકાનું પુસ્તકનું જીવન કલમ છે. મારા પિતાશ્રી નથી, ભૂપેન ઉપર જ લખાયું છે પુસ્તક આપેલું. મારા ભૂપેન તો ખાલી વચ્ચે, મારા પપ્પા તો ખાલી વચ્ચે મીડિયેટર આવ્યા અને એમના લીધે હું આ ભૂપેન કાકાને લખવા માટે આ એક દસ્તાવેજી કરંટ પુસ્તકમાં છે.
ગુજરાતીમાં ભૂપેન કાકાનું પ્રથમ પુસ્તક છે કે આટલી બધી રીતે લંબાણપૂર્વક લખાવું હોય. બાકી બધા નાના નાના આર્ટિકલ્સ બધા અંગ્રેજીમાં બધું બહુ લખાય છે, ઇન્ટરનેશનલ જનરલમાં બધું બહુ લખાય છે. પદ્મશ્રી એવોર્ડ ભૂપેન કાકાને મળ્યો એ આઉટસાઇડ ઇન્ટરનેશનલ વ્યક્તિઓએ આપણા ઇન્ડિયા લોકોને પ્રેશર પાડ્યું કે ભૂપેન કાકાને કોઈ આર્ટિસ્ટ છે, તમે એ લોકો જાણતા નથી અને તમે એનું બહુમાન નથી કરતા. એટલે પરદેશના લોકોએ આગ્રહ કર્યો ભૂપેન કાકા અને ત્યાર પછી એમને પદ્મશ્રી એવોર્ડ માટે નિયુક્ત કરવામાં એમને પોતાનું ફાઇલ કે એનું પોતાનું નોમિનેશન કર્યું જ નથી. અને એ વખતે મારા પપ્પા પણ એમની સાથે દિલ્હી પદ્મશ્રી એવોર્ડ લેવા માટે સાહેબે થોડીક વાત કરી પ્રથમ મુલાકાત, પણ મારા શબ્દ બહુ વાત કર્યું. 1976ની આસપાસનો સમય હશે. મારા પપ્પાની ટ્રેનમાં ઉતરવાનું અને ભૂપેન કાકાની ટ્રેનમાં ચડવાનું. એકદમ નજર ભૂપેન કાકાની મારા પિતાશ્રી પર પડી. એટલે તો પ્લેટફોર્મ ઉપર જોરથી બૂમો પાડવા માંડે, ઓ વલ્લભ, ઓ વલ્લભ, ઓ વલ્લભ. અને એની નજીક આવવા માટે દૂર દૂર ગયા. પપ્પા એકદમ હાજર ચડીને જોયું, મેં જોયો નથી, જાણતો નથી આ વ્યક્તિને. શા માટે મને બૂમો પાડે છે? થોડી ઘણી વાતો થઈ. અમારા પિતાશ્રીનું ચિત્ર શરૂઆત જ્યારથી પેઇન્ટિંગમાં હતા ને ત્યારથી મારા પપ્પાનો ચહેરો એના પેઇન્ટિંગની અંદર આવતો. પછી તો બધું શરૂઆત થઈ બધી અલગ જ છે, પણ કોણ જાણે અનાયાસ ભૂપેન કાકા કોઈ પણ ચિત્ર પુરુષ વ્યક્તિનું દોરે એની અંદર કંઈક ને કંઈક મારા પપ્પાની ફિગર આવી. યુ કેનોટ પ્લીઝ ટુ ઓલ એના પર આખું ચિત્ર જે કર્યું છે એમાં તમને ઘણી વખત એવું દેખાય કે આ ભૂપેનનો ચહેરો છે, પણ ઘણી વખત બીજી એંગલ પર તમને આ વલ્લભ છે. બહુ તમને ખાસ થાય, બહુ સરસ પેઇન્ટિંગ છે. અને ઇફ યુ કેન પ્લીઝ ટુ ઓલ then you cannot please to yourself. ભૂપેન કાકાએ આપી નેરેટેડ એવી રીતે એમને ઉભા કરીને ચિત્ર બનાવે છે અને પોતાની જાતને એમને ઉઘાડી કર્યું છે. એનું જીવન ખુલ્લી કિતાબ જેવું. સ્ટેશન ઉપર વાર્તા વાર્તા નજીક આવ્યા. મારા પપ્પાને એની સાથે જોવા મળે, આશ્ચર્યચકિત. પછી કહ્યું, અરે વલ્લભ, તારે કેટલા વર્ષોથી શોધું છું એવું એક્સાઇટેડ બુક પુસ્તકનો એ ક્યાં છે, ક્યાં રહે ત્યાં મને બતાવો કે સર તમે બધા એડ્રેસને બધું આપવાનું. તમે શાંતો ના શું છે, શું લીધું એકદમ અજાણ્યા માણસ જોડે કેવી રીતે એકદમ એ કરવું. પછી બે ગણ ગામે સુરત સ્ટેશન ચા નાસ્તો કર્યો અને બીજા દિવસથી એમને માંડવી લાડવાડામાં રહેતા હતા ત્યાંથી એમની અવર જવર ચાલુ. ભૂપેન કાકાનો પહેરવેશ એવો નગર વગર કાપતા, કોઈ વગર ઇસ્ત્રી વગર હોય, ઇસ્ત્રીવાળા તો હોય જ નહીં. નાનો ઓવરકોટ ઉનાળાની અંદર પણ પહેરે અને એક બગલ ઘર લટકાય સ્કેચનો સામાનને બુક્સ બધું વાગી મૂકે અને બગલ ઘર મસ્ત હોય. અને પહેલાં તો લેમિનેટ વાપરતા કટાડતા છે. અને એને મારા પપ્પા આવ્યું જેમ રોજ સવાર પડે બહાર જવાનું. ભૂપેન કાકા પોતે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હતા એ વખતમાં. અને 33 વર્ષની ઉંમરે હું જુનાગઢ ગયો હતો, મુંબઈ ફર્ગ્યુસન કોલેજ એટલે ફર્ગ્યુસન કંપનીમાં આપણે કંપનીમાં નોકરી કરતા હતા. બહુ સારો પગાર હતો. એટલે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ તો જોડે જ 1% કે 1.5% લોકો પાસ થાય. અને બોમ્બેમાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ બધા વિચાર જોવે કે 33 વર્ષની ઉંમરે આવી રીતે વિચાર કરવો કે મુંબઈ છોડી દેવું અને આ ચિત્રકાર બનવા માટે પોતાનું લાઈફનું શરૂઆત કરે. કોણ લોકો બધી રીતે લઈ શકે. બેઉ જણાની મિત્રતા સ્વાર્થ રહી. સ્વાર્થ અને બે અનોખી મિત્રતાથી સમગ્રનું મહત્વ એમાં જીવન હતું. આજે 22 વર્ષ પછી આપણે બધા એમને યાદ કરીએ છીએ. અહીંયા ભાઈ ભૂપેન કાકાને મળો ભાઈ બેઠાલા હશે સૂક્ષ્મ રીતે અને એ પણ વિચારતા હશે, આપણને આશીર્વાદ આપતા હશે કે મને આટલા વર્ષોથી તમે લોકો યાદ કરો છો. ભૂપેન કાકાની છેલ્લા મારા પિતાશ્રી 31મી જુલાઈ એક્સપાયર થઈ ગયા અને ભૂપેન કાકા 8મી ઓગસ્ટ 8 દિવસ આજે 22 વર્ષ થયા.
કરતા બનતું છે. અમે ના પોસ્ટ તબિયત હતી અને મારા પિતાશ્રી ઉડી ગયા પછી અઠવાડિયાનો 8 દિવસનો ગાળો રહ્યો. એ દિવસની અંદર ભૂપેન કાકાને જે પણ લોકો મળવા માટે આવે, ખબર અંતર કરવા માટે આવે, બધાને એક જ વાક્ય રટન ચાલતું હોય, વલ્લભ ગયો પછી મારા જીવનનો કોઈ અર્થ નથી, મારે જલ્દી પ્રભુને બોલાવી લે તો સારું. આ જ એમનું ઘટના રહ્યા અને આ જ બોલ્યા કરે. હિતેશભાઈ અને એમના ભાઈ કમલભાઈ જેવું ભાઈઓએ છેલ્લા ભૂપેન કાકાના 3 દિવસ એમની સાથે રહ્યા હતા. 24 કલાક વારાફરતી વાર્તા કરે અને એ લોકો ખૂબ જ સેવા કરે છે. જે એમના મિત્રો વર્તુળમાં કે સગાવતો હતું કે આ લોકોએ ખરેખર દાદ માગી લેવું એમના દિવસોને છેલ્લા નથી કર્યા. દેવજનાએ ભૂપેન કાકા મારાની એટલી બધી સુખદ યાદો છે, સ્મૃતિઓ છે, સ્મરણમાં મૂકતા ગયા છે. જે બધું સાહિત્ય, પત્રો, ફોટાઓ, મારા સ્મરણમાં રહેલા પ્રસંગો, આ બધું તમામ મટીરિયલ વિરેનભાઈને આપી દીધું. હું પણ વિરેનભાઈ સાથે બધે જ મુલાકાતો માટે જતો હતો, જેથી કરીને ફોટો સિક્કો બધે ચાલે. હું વલ્લભદાસનો છોકરો, વલ્લભદાસનો છોકરો, એ લોકો થોડું બધા રિસ્પેક્ટ આપે અને અમને કંઈક સાચો થોડો જવાબ પણ આપે. ખાસ એ વસ્તુ જણાવવાનું કે આ પુસ્તકનું જે નિર્માણ થયું તેઓની દૃષ્ટિનું તર્પણ અને અર્પણ કરે છે. એમાં કાલે હું નિમિત્ત બન્યો છું. સ્વાર્થ સિવાય સંબંધ ન રાખવાનું વલણ આજકાલનું નથી, એ દરેક યુગનું લક્ષણ છે. હવે ઉપભોક્તાવાદી યુગમાં એ વિશેષ વપર્યું છે. આવી પણ દોસ્તી હોઈ શકે, સંબંધો પણ હોઈ શકે, દર્શાવવાનું આ પુસ્તકનો હેતુ છે. જેથી માનવમાં વિશ્વાસ જળવાયો રહે એમ કહી શકાય. દોસ્તીનું તર્પણ એટલે આ પુસ્તક. Sir and everyone who spoke here today and all of you for sitting and listening. Sir has asked me to inform you that for today the book will be on a discounted rate. So if anyone is interested, please go and take it. And I would like ma'am to please say a few words, but I will read this all of this because this stands for many. The number of people is 22nd death and was Bhupen Kakar. Maybe we can memorize that artist. That will be Shanvi. Thank you. I take this opportunity to thank Deepak sir to give so much of insights to this, and thanks for all of you for coming and joining it, because when they came with this proposal saying that this is his 22nd death anniversary, 8th of August, I thought this is the proper time to remember him with so much of affection. How they wrote the book, and sir was reading it and deciphering it for us to understand it in a better perspective. And thank you, sir. Thank you so much for always being a guiding torch for us. And so we will disperse here, and very warm and good, happy Raksha Bandhan day for all of you tomorrow. Celebrate your sisterhood and brotherhood and by tying Raksha Bandhan. And thank you so much for